India-China handshake at the Brics. Discussions between Prime Minister Modi and China's President Xi Jinping are expected following recent agreements on patrolling arrangements along the LAC in eastern Ladakh. Now, this marks quite a significant breakthrough after nearly 5 years of tensions between the two nations along the LAC, with recent diplomatic and military negotiations leading to disengagement. So, patrolling arrangements have already begun, and next step would be disengagement of those troops. The process is currently underway, which means there could very well be a bilateral talk as well between Prime Minister Modi and Xi. Amid this, Army Chief General Upendra Dwivedi has emphasized the importance of restoring the April 2020 status quo along the line of actual control. He stressed the need for phased disengagement, de-escalation, and rebuilding trust between India and China as patrolling resumes. So Brics is increasingly becoming a very powerful grouping of non-West leaders, and not just the government of India, but several governments, and including the Russian President Vladimir Putin has quoted Prime Minister Narendra Modi saying this is not an anti-West grouping, it is just a non-West grouping. It's a very powerful grouping. All right, we have big news here. Prime Minister Modi has just landed in Russia to be part of the Brics summit. Well, Russian President Vladimir Putin all set to host 24 world leaders at the Brics summit currently happening in Kazan. This is certainly a show of strength for Putin and a message possibly to the West. Prime Minister Modi, who has been friendly with Russia, has landed just at this point. The visuals coming in of Prime Minister's landing in Russia's Kazan. We're looking at Putin, who's hosting this Brics summit, where we're looking at several world leaders who are going to be part of this Brics summit, including China's Xi Jinping. A lot of talk and buzz around Prime Minister Modi having a bilateral, in fact, India having bilateral talks with China after the two nations have come to an agreement on disengaging troops. Now, that could certainly be the highlight for India as part of this Brics summit, but certainly for Putin, this is a show of strength. He does want to use the Brics summit to show that he is still a world power. He's strong and has thrived despite the ongoing war with Ukraine. So for Putin, a big statement indeed as he hosts the Brics summit in Russia's Kazan. That's the image that we're showing for you of Prime Minister Modi, who's just landed into Kazan. He is part of this Brics summit. In fact, we know Putin is seeking to use the Brics summit at this point to show the world that they are put together and they're friendly with their allies, India, China, both world leaders who are currently part of this Brics summit. Apart from a few others, there are at least, we hear, 20 world leaders who are going to be part of this Brics summit. It starts today. Prime Minister Modi, of course, has just landed. The meetings to start in the hours to follow. Geeta Mohan joining us on the phone line, Foreign Affairs Editor, to give us more clarity on this. Geeta, give us more on Prime Minister Modi, who's just arrived at Kazan airport. Brics summit to begin from a little while from now. Give us more on what's on the agenda and the top world leaders who are part of it. All right, we're going to try and patch Geeta Mohan there. But, well, let me quickly cut across to Shivani, our correspondent, joining us for more on that. Shivani, Brics group, in fact, this is a group of emerging economies that has come together as part of this Brics summit. We'll be discussing layers of issues that prevail. Give us more on the actual significance of this summit that's currently held in Russia, hosted by Putin. Nabila, this is a big summit, and Prime Minister Narendra Modi has just landed in Russia. He had emplaned in the morning, and we were also showing what he had shared that time when he was just starting his journey. He said because India is...
Shivani, stay with us. I'm going to quickly cut across to Gaurav Sawant, who's right there in Kazan. I'm going to take our viewers through that report. Listening. ओडिसी नृत्य करते हैं वो भी, और जो इंडोलॉजिस्ट यहाँ पर है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। यहाँ पर इस्कॉन के कई सदस्य हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उसमें कितना जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। एक चीज और जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कजान जिस शहर में मैं हूँ, कजान शहर में भारत का वाणिज्य उच्चारण, भारत माता की जय के नारे, जय हिंद का नारे, भारत और सुरक्षाकर्मी भी और बड़ी संख्या में यहाँ पर भारत जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे भी लगातार आप देख सकते हैं। और स्वागत की पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना उत्साह है भारतीय समुदाय में। Right. That's Gaurav Sawant, who's right there on the ground. He's going to bring us all the live updates as Prime Minister Modi has just arrived. Remember, the Brics, it's a group of emerging economies which is seen as a response to the West, almost a rival group to the G7 and other Western groups. Russia and China have long pitched Brics as the central to their development and their projects that they come up with, usually presented part of the BRICS summit. So this is certainly a way to flex for Russia and China. India very much part of it. Gaurav Sawant, who's on the ground, listen in. उसके यहाँ मीडिया को आने की इजाजत फिलहाल नहीं है, लेकिन जिन वार्ताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किन किन के साथ वार्ता होगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से युद्ध चला आ रहा है, उस युद्ध को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के इकलौते ऐसे नेता है जिनका स्वागत रूस में भी होता है और उनका स्वागत यूक्रेन में भी होता है। रूस के राष्ट्रपति भी उनकी बातें सुनना चाहते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उनकी बातें सुनना चाहते हैं। इस युद्ध का समाधान अगर कोई देश निकाल सकता है जिसका दोनों पक्ष सम्मान करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत किसी भी खेमे में नहीं है, भारत किसी खेमे का सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हम अमेरिका के खेमे में है, ना हम रूस के खेमे में है। अमेरिका भी हमारा उतना ही सम्मान करता है जितना रूस हमारा सम्मान करता है, और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति वो बातें सुनना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीस प्लान था। 5 घंटों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 8 जुलाई को बातचीत हुई थी। उस ट्रिप को मैं रिपोर्ट कर रहा था और उस समय जितने विशेषज्ञ यहाँ रूस में है, जितने एनालिस्ट रूस में है, वो लगातार यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रोकने का मार्ग निकाल सकते हैं जो दोनों ही पक्षों को स्वीकार्य हो। देखिए, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है रूस हार जाए, रूस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। यूक्रेन क्या चाहता है कि वो रूस को पराजित करके अपना इलाका वापस ले ले, ये हो नहीं सकता। रूस क्या चाहता है कि अमेरिका के दबाव में यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने। क्या ये संभव है? क्या नेटो का सदस्य बने बिना और ईयू का सदस्य बने बिना जो इलाका यूक्रेन के हाथ से अब निकल चुका है, या कुछ इलाके की अदला बदली के बाद शांति बहाली संभव है? ऐसे कई प्लान्स पर विचार चल रहा है भारत और रूस और यूक्रेन के बीच इस समय। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे तो मैं यूक्रेन भी गया था और मैं वहां से भी रिपोर्ट कर रहा था, और वहां पर भी लोगों को उम्मीद यही थी कि शांति बहाली का कोई रास्ता निकल कर आएगा। और अब प्रधानमंत्री फिर यहाँ रूस आए हैं। यहाँ पर जो भारत माता की जय के नारे सुन रहे हैं ना, ये भारत माता की जय के नारे भारतीय समुदाय का उत्साह साफ तौर पर आपको दर्शाता है। पहली बात। दूसरी बात, शांति बहाली एक तरफ, राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान के साथ जो की बातचीत है वो भी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान को इस समय अंदेशा यह है कि इजराइल की तरफ से जबरदस्त पलटवार होगा
ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर दागी थी। जब मैं इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहा था तो इजराइल में लगातार ये कहा जा रहा था कि जबरदस्त पलटवार करेगा इजराइल। ईरान ये चाहता है, क्योंकि भारत ईरान का भी मित्र है और भारत इजराइल का भी मित्र है, कि वो पलटवार तेल के कुओं पर ना हो, वो पलटवार तेल के भंडारों पर ना हो, सिविलियंस पर ना हो, राष्ट्रपति के ठिकानों पर ना हो, केवल